नमस्कार। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के इंटरेक्शन सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं इरम जैदी आपके साथ। दैनिक जीवन में हमें रोजाना किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के नए और इनोवेटिव समाधान खोजने वाले युवाओं की तलाश के लिए आयोजित किए गए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में हजारों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कड़ी प्रतियोगिता के बाद जो टीमें सेलेक्ट हुई हैं, अब वे ग्रैंड फिनाले की तैयारियों में जुटी हैं। बस कुछ ही दिनों में इसकी विजेता टीमें आपके सामने होंगी। तो आइए बात करते हैं ग्रैंड फिनाले जीतने के लिए तैयारी कर रही टीमों से। हम टीमों के सदस्यों से जानेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, किस समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी तक का उनका SIH सफ़र कैसा रहा और ग्रैंड फिनाले के लिए वे क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। दरअसल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं को गैर पारंपरिक तरीके से हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। यह युवाओं के बीच नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स सोच को बढ़ावा देता है। वर्ष 2017 में शुरू हुए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का यह छठा संस्करण है। इसमें हमारे यंग माइंड्स एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, पर्यावरण सुरक्षा, जल संरक्षण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन और साइबर सिक्योरिटी तक के क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए नई नई खोज कर रहे हैं। ये इनोवेशंस आगे चलकर उनके लिए उज्जवल भविष्य के रास्ते तो खोलेंगी ही, आम जनजीवन भी आसान बनाएंगी। छात्रों की इस पहल से भारत को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन को भी बल मिलेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के इंटरेक्शन सेशन में अपने एक्सपीरियंसेस और रजिस्ट्रेशन से लेकर यहाँ तक पहुँचने के सफ़र को हमारे साथ साझा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं चितकारा यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब की टीम, ब्लॉक सिक्योर एक्स और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर की टीम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। हम सबसे पहले बात करेंगे टीम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से। इसके टीम लीडर रचित अग्रवाल हैं। रचित अग्रवाल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका क्या है जिस पर आप काम कर रहे हैं, प्लीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। Yeah, first of all, thank you, ma'am, for वेलकम। providing me this opportunity to speak about my experiences and my like on the problem which we are working on. So, first of all, like talk about my experience. This is not my first time applying for the SIH. I also previously in the 2022 when the SIH 2022 happened, I applied that time also, but unfortunately I wasn't able to clear that time, and it is an also an boost to my boost to my enthusiasm this time, cause I made it to finale this time. So that was also a good thing. Uh, Coming to my problem statement, our team is working on the online blockchain verification system for certificate. People can post certificates and get verified, they can verify a certificate from the government organizations. So we like this thing is already working in web 2 culture, and we are bringing it to web 3 culture, cause web 3 culture is kind of secure than the web 2 culture. And also we have added some really great features in the platform to make it uh, friendly for the user, and give ease to the users. So we have written our own smart contracts to make it more secure, and also we are like integrating some SDKs and some login features, which is easier than the web 2 culture also, like the Google sign up things and the all, which is kind of missing in the today's web 3 culture. So these things made our project more easy to use, and friendly with the users. And yeah, that's most about it. Also talking about the thing when we got the information about like selection for the grand finale. um, from that day, our team is constantly just working with like sleepless nights, and like making mind maps, coding at like 3 a.m. till 3 a.m. and all. So yeah, it's kind of very excited. ओके,
वेरी गुड रचित, हमने देखा कि आपने पिछले साल भी ट्राई किया, लेकिन अगर आपका नहीं सिलेक्शन हुआ तो भी आपने हिम्मत नहीं हारी। इवन आप कहते हैं कि आपने उसको एक बूस्ट की तरीके से यूज़ किया। तो ये हमारे दर्शकों के लिए एक और प्रेरणा है कि आप ट्राई ज़रूर करें, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ट्राई करते हैं तभी आप लोग इस मुकाम तक पहुँचते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आपने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और आपने लगे रहे, आप जुटे रहे। हमें उम्मीद है कि आपका ये जो इनोवेशन है लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेगा। यश कुमार भाटिया, आपका इस टीम में क्या योगदान रहा और आपको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर काम करने का आइडिया कैसे आया? First of all, I would really like to thank you, ma'am, for giving us this wonderful opportunity that we could present ourselves here. वेलकम। Uh, while working on this project, first of all, when this statement came from us, we were very interested in it because actually the same culture as the Sachit mentioned was working on Web 2. But the problem was that in Web 2 there was not that much of security as compared to the Web 3 because it is always a centralized version where someone or the other is using from a server. But if you talk about in Web 3, there is no centralized system. There is basically the NFT which is being using for the generation of online certificates. That generation of online certificate is the validity proof, वो प्रूफ जो कि एंड तक मौजूद होगा कि चाहे Okay. इंसान रहे ना रहे, बट या इट विल बी देयर टिल वट एवर हैपन्स. And this is a very good topic, we understand, and in spite of having this topic was that even of good knowledge of some blockchain which we have also studied in our curriculum. I think that the world is slowly shifting towards decentralizations, which is basically in Web3, which is a very good server and which would help in nature. My role in this team is as a front-end developer. I am basically working as a front-end developer and a presentation speaker. I would be also giving a presentation of my team, what I have to present. I have to make all the strategies how to present. And the wonderful thing is that also a front-end developer to develop all the front end which is being made, the user experience, how the user works, how the connectivity goes, how the pages will look attractive, how is that the person would create interest in that website which he is visiting, what would be the flaws and all that. So yeah, this is my wonderful contribution to this team, and I hope it helps me and my team to get further, and we hope that we win the grand finale and give a Thank good news to the people and we serve the community. Thank you so much, Yash. We see that you value your team members a lot and you are just dealing with your problem statement, selected problem statement very well. एंड आप लोग ये सभी चीज़ें देखते हैं कि इसका हमें इम्पैक्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों के लिए कितना यूज़फुल होगा, आने वाले समय में ये जीवन को कितना आसान बनाएगा लोगों के लिए। ये आपकी जो सोच है ये सच में बहुत अच्छी है। और SIH का जो मेन मकसद है, जो SIH का थीम है कि नो प्रॉब्लम इज़ टू बिग एंड नो आइडिया इज़ टू स्मॉल, आप लोगों के एफर्ट्स उसको बिल्कुल ट्रू प्रूव करते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ आई रिक्वेस्ट कौस्तुभ एस नायर, आप बताइए कि आपका अभी तक का SIH का अनुभव कैसा रहा? So starting with gratitude, thank you so much, ma'am, Welcome. for allowing us to respond and interact with the audience. So talking about the experience till now, it has been a rumble experience, like lots of ups and downs, especially talking about the team, the problem statement which we have done, we've been working on. So there were a lot of ups and downs because at some point of time there are clashes between the teams, there are clashes between the technologies, which technologies we have to use, which we cannot use, and which creates more complexities. So we have been dealing with it. We have been working, as Rachit said, we have been working sleepless nights after knowing that we have been selected for the grand finale because we want to represent the community and as well as we all are wanting to serve for the nation. So we are making our contributions whichever we can. We are working in a team. We are organizing all the content which we are going to present at the grand finale. So the experience this far has been very good, and it's my first time in a hackathon reaching this far. So I'm positive about it and hope to win the hackathon. डेफिनेटली हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। हम सभी पार्टिसिपेंट्स जो SIH में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के लिए कामना करते हैं कि सभी अपना बेस्ट परफॉर्म करें और मे द बेस्ट विल विन। और आपका जो अभी तक का अनुभव रहा है कौस्तुभ, दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव।
और यही है इस SIH का के पीछे हमारी सभी की सोच के लोग बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़ें, एक टीम में काम करें और एक टीम में काम करते हुए वो कुछ ऐसी अलग समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालें जिस पे शायद हम लोग कभी ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन अब हमारे जो युवा हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, वो हम देखते हैं जब हम लोगों से बात करते हैं और आप लोगों से बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि जिन समस्याओं को हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, but you guys are working on those problems day and night and trying to bring a new revolution, a new innovation and some discovery which will help the people around the nation, and it will help other people also. So thank you so much for doing this much effort, for just using your brains in the right direction and giving this nation this much devotion. Thank you so much. Now I request Pragati Porwal to just tell us that how you are managing your regular studies with the preparations of SIH. So, first of all, gratitude. Thank you so much for Welcome. providing this opportunity, and thank you for selecting us as a finalist in SH. Right. Uh, Basically, with the studies, it's not easy, as Kaustubh and Yash mentioned, as Rachit mentioned, that we are working day and night as we got the news of being selected in the SIH. We are also focusing on our studies, but we have a little bit of gap in our studies right now. Like, we just have our final exams left, so we are able to concentrate more on the project, most importantly. And the college especially is helping us to maintain the, like, to manage the studies with being able to do the project. So it is a bit easy with the help of college as well as the team, uh, which is working constantly with us and supporting us in every at every place. ओके, थैंक यू सो मच। हमें अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपनी रेगुलर स्टडीज़ के साथ SIH के लिए भी पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और आपका इंस्टीट्यूट आपको फुल सपोर्ट करता है ताकि आप लोग इस मुकाम तक पहुंच पाएँ। ये एक ऐसा SIH एक ऐसा मुकाम है जहां पर पहुंचने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तब यहाँ पर पहुंचते हैं। आप सभी को बधाई। अब प्रखर जैन, हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के, अभी तक आपने SIH के साथ जुड़कर क्या अनुभव किए हैं? Okay, thank you, ma'am. First of all, thank you for giving this wonderful opportunity to our वेलकम। team. Firstly, as we know, we are building our project on Web 3.0. Currently, these projects are already run on Web 2.0, but we are building this project on Web 3.0, which will make socially easily to everyone. We are building UX for using front end, which will be easy to everyone. And my experience throughout this, first of all, which select, there are many problem statement in the hackathon. First of all, we will select our statement. In our team we have blockchain enthusiastic, so we move forward with the blockchain projects. And then we uh, we try to find out a perfect balance team for our project. Then that will be a moment when we build our team. And थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रखर। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करने से लेके अभी तक अपनी टीम का पूरा सहयोग, आप लोगों को एक दूसरे के साथ आप लोगों ने पूरे सहयोग से काम किया, तभी आप आज फाइनलिस्ट हैं। अभिषेक जोशी, आप बताएं कि आपका अभी तक का अनुभव कैसा रहा है? First of all, good afternoon, ma'am, and thank you so much for providing such a great opportunity. I am वेलकम। Abhishek Joshi from PIT Jaipur. It's an honor for me to be part of Smart India Hackathon. So I mainly work on backend technology and as well as blockchain technology in this team, like creating a contract, and I also use a ERC 115 to make a logic and require to validate a certificate. So as per government vision, we make it more essential and more secure this project. And
make a reliable solution for government. Okay. That's all. Okay. Thank you so much, Abhishek. Thank you so much, टीम गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी. थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ जुड़े, आपने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी जो हार्डशिप्स हैं, जो भी दिक्कतें आपको यहाँ तक पहुँचने में आई, उस सभी के हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए. अभी हम बात करेंगे ब्लॉक सिक्योर एक्स टीम से, जिसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत. प्रशांत, स्वागत है आपका इस इंटरेक्शन सेशन में. आप अपना अभी तक का SIH का सफ़र हमारे साथ साझा कीजिए. Yeah, first of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Prashant, and I am doing problem statement 1451, which is basically creating an AI and ML tool for detecting anomalies between different networks, firewall routers, and devices. So, moving forward, this was a challenging statement, and it wasn't easy at all, though we faced hardships at every point of time. It was challenging, but at the same time, we were having multiple effects of uh, dedication and all. Um, with our collaboration with the team and team effort, we finally got selected in SIH. Though multiple teams participated in this hackathon from our university, and it was very challenging for us to even uh, score at first. And so, moving on to the problem statement, our problem statement basically focuses on how we are going to detect anomalies and misconfigurations between the network devices and firewalls. And it's basically we are just scrapping out through networks and crawling every part of sections from the logs and monitoring every activity which is necessary, so that we can get anything precious from that and get a valuable information with respect to that. As a cybersecurity professional, I am the technical head of this particular project and the team, and I will be giving the technical part aspects and every uniform section of this particular project. And thank you very much for giving us the opportunity. And thank you. थैंक यू प्रशांत. क्या आप बताना चाहेंगे कि आपका जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जिसका आप लोग समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप जुटे हैं, ये किस तरह Yeah. से समाज को, हमारी सोसाइटी को कोई अपना कोई लाभ पहुंचाएगा, या उनके जीवन को आसान बनाएगा, या सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? Yeah, our problem statement basically focuses on every devices, and it's obviously we are in a technology freak world, and every day the devices are introducing newly, and the technologies are also introducing, and along with that, the negligible part and the security part of every device and things are getting compromised day by day, because when we are doing something, then it's like things are not that protected which it needs to be, and the privacy of data and protection needs to be stabilized in this modernizing world, and we have to work on that, and that's why it's necessary for us to make something new and innovative, so that we can create something broad about this thing, about security, and about society. And where there comes our project, which is basically creating some software and some device, or some type of hardware, which is basically implementing all those policies, detection techniques and tools, which will make us the problem statement giver, and which will make this society something which will contribute to this particular problem of security. ओके. ओके. थैंक यू सो मच प्रशांत. थैंक यू सो मच. आपने इतना सारा अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में हम सभी को बताया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब Thank you, ma'am. मैं स्वागत करती हूँ वैभव खुल्लर जी का. वैभव खुल्लर जी, बताइए कि SIH का अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा है? Yes, ma'am. First of all, good afternoon, ma'am. This has been a really roller coaster journey for me. Me and my team has learned a lot of things. First,
And being myself, I'm a full stack developer. But still, these projects need a lot of further tech stacks which I've learned and implemented, which made me learn a lot of new things. And I have been one thing which I have learned is team, contributing to a team. Firstly, I am not a team player. I used to work individually, but what it made me learn that was a team spirit. How do I cooperate with my team? How do I have to manage my team, and how I have to contribute to a team so that we can eventually, or at a point, we have to grow our team so that we can um, make our team growth to a next level. Okay, Vaibhav. Anything else you want to add about your team members? Since many, I think 2 or 3 members are or more there from your team, but due to some issues, they could not join this interaction session. So, would you like to mention something about your team members? Yes, ma'am. Our team has been really cooperative. They had pushed themselves a lot to their limits. I would say so. We all have a lot of sleepless night in which we have worked, cooperated, which means we have a lot of Google Meets. Sometimes also we also have little bit of conflict, but we have gone through that thing and facing a difficult time and going through a very difficult journey and making and ending up to this place was really, I would say, a proud moment for me and my team. Okay. Thank you so much, Vaibhav. थैंक यू सो मच टीम ब्लॉक सिक्योर एक्स एंड गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। आप दोनों टीमों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस इंटरेक्शन सेशन में जुड़े। हम सभी SIH के पार्टिसिपेंट्स को अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो ग्रैंड फिनाले के लिए अपना बेस्ट परफॉर्म करें और अपने अपने से जो भी आप लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट किया है उसका बेस्ट समाधान आप खोज निकालें। इंटरेक्शन सेशन में आप सभी जुड़े रहे और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं। इंटरेक्शन सेशन से जुड़े रहें और ताज़ा अपडेट लेते रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।